वन वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टार्ट करते हैं 44 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन, 45 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन, फ्लक्चुएट डिक्टेशन रहेगा। ओके, 1 और 2 वर्ड पर मिनट थोड़ा फ्लक्चुएट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स टाइपिंग कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि 50 एटलीस्ट 50 वर्ड पर मिनट आज के टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन हो गया है, इसलिए 50 वर्ड पर मिनट 45 वर्ड पर मिनट टाइपिंग तो होना ही चाहिए। ओके, एंड शॉर्ट हैंड स्टूडेंट्स जो शुरुआती बच्चे हैं शुरू में शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स बना लेते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी इस डिक्टेशन को ज़रूर लिखें ताकि अपनी स्पीड को भी इन्हेंस लाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी टॉकिंग। ओके, स्टार्ट। आई राइज टू गिव माई होल हार्टेड support to this measure, which I consider to be of immense importance and a landmark in the history of industrialization in the country. This bill aims at setting up a permanent machinery for according protection to those industries of our country which stand in need of it. This country, which is so very rich in all its resources, was at one time of its history at the pinnacle of glory, not in the production of raw materials, but in the manufacture of finished goods. But the continuous foreign rule for centuries ruined all its industries, with the result that the country has been brought down from that height of industrial glory. For centuries, our production, though it was more or less of the cottage industry type, commanded markets throughout the world. We know what steps were taken by our foreign rulers to discourage our home industries and to raise the protective tariff walls in their own country to make it industrially sound. We know how our weavers were tyrannized. It is a matter of history and needs no repetition here. Therefore, this country, which has been under the heel of the foreigners
for centuries has now to begin its life afresh and to resonate and renovate its ruined industries. I therefore regard this measure, which is the first constructive attempt on the part of the government to bring industry on a sound footing as a great landmark in the history of industrialization. For years, this country and the government, which was at the helm of its affairs, believed in unrestricted foreign trade. It was only during World War I that the then government thought for the first time that some steps must be taken in this country towards industrialization. An industrial commission was appointed in 1916. It apparently had nothing to do with the tariff policy, but for the first time it concentrated attention on the sphere and domain of the development of industries in the country. Times were changing. There was a feeling of political consciousness amongst the masses. With the August Declaration of 1917, there was a cry for the grant of fiscal autonomy, and for the first time we saw fiscal autonomy in the convention. In 1923, the first fiscal commission was appointed, and subsequently the government appointed ad hoc tariff boards. We must keep in mind that it was still the foreign government that was at the helm of affairs, and the terms of reference of these ad hoc tariff boards were very limited in their character. For example, before any industry could be considered to be entitled for the grant of protection, it was essential that there should be abundant natural resources. For that industry available in the country itself, there should be
a local market for its produce. There should be real potentialities for its development, and its development at a rapid pace. Even then, the production was afforded only for limited periods, and that too only in cases where a certain industries could stand foreign commission. These were the limitations. Let's stop थोड़ा सा. यस, अब डिक्टेशन का जो डिक्टेशन बोली थी उसका ना करके दूसरे सेशन का मैं चैप्टर का ग्रामर रूल बताती हूँ. ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये रूल्स अगर आप डिक्टेशन लिख रहे हैं और डिक्टेशन को पढ़ रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिशन हो रहा है आपको वर्ड्स का. और ये जो जिसमें इसमें वर्ड्स हैं वो एडिटोरियल से क्या कि बहुत अच्छे वर्ड्स हैं इसमें दिए गए हैं. ठीक है, एडिटोरियल में भी रिपीट होते हैं, जैसे टुडे के, फ़िलहाल के एडिटोरियल में. और ठीक है, तो इससे ग्रामर रूल को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ ध्यान दीजिए. देखिए फर्स्ट लाइन, this bill has been brought forward for the purpose of amending the 1954 Act, which originally applied to Part A state high courts. अब देखिए, this bill is a main subject of this sentence and main subject singular है, तो इसके अकॉर्डिंग singular verb has. okay, has been brought है और brought तो हैज़ बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस किस में जा रहा है, पैसिव वॉइस में. ठीक, हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस आएगा. ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द पर्पस. अब प्रपोजिशन फॉर, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये ध्यान रखिएगा. ओके, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं होता है. प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है. फॉर द पर्पस ऑफ, अब फिर ऑफ प्रपोजिशन, फिर उसके बाद जेरेंड अमेंडिंग. जेरेंड इज अ अमेंडिंग. ठीक, V1 प्लस ING को जेरेंड फॉर्म कहते हैं. द 1954 एक्ट विच, अब यहाँ पर जो विच लगा हुआ है WHICH क्वेश्चन टैग विच, तो इसमें विच रिलेटिव नाउन है, क्योंकि 1954 एक्ट जो है वो नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ हुआ है. ठीक है, ध्यान रखना है. इस तरह नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज, वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, ये सभी इस लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न में आ रहे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिए. देखिए, विच जो कि रिलेटिव प्रोनाउन द 1954 एक्ट को जोड़ रहा है. ठीक, रिलेटिव नाउन है. ओरिजिनली, ओरिजिनली क्या है बताइए. देखिए, अगर कहा गया कि ओरिजिनली इस सेंटेंस में कौन सा फ्रेज है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ओरिजिनली अप्लाइड को क्वालिफाई कर रहा है.
और अप्लाइड क्या है, वर्ब, ठीक, वर्ब है ना इस सेंटेंस में। तो ओरिजिनली क्या हो जाएगा, ओरिजिनली वर्बियल फ्रेज हो जाएगा, वर्ब फ्रेज, ठीक। किसको क्वालिफाई कर रहा है, अप्लाइड को। तो ये है एडवर्ब, ओरिजिनली एडवर्ब है और अप्लाइड वर्ब है, तो वर्बियल फ्रेज को, वर्बियल फॉर्म को क्वालिफाई कर रहा है। टू पार्ट ए स्टेट हाई कोर्ट्स, but after the recognition has been so adapted, अब the organization is a main subject, organization is a act as a noun, क्योंकि TION जिस भी वर्ड में लगा होगा, सब्जेक्ट सेंटेंस के वर्ड में जिस भी वर्ड में TION लगा होगा वो हमेशा नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन, अब रीऑर्गेनाइजेशन नाउन है, कैसे पता किया, TION लगा हुआ है और इसके पहले द आर्टिकल का यूज़ हुआ है, तो इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन इज़ अ नाउन एंड ऑल्सो इज़ अ मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगी, और ये सेंटेंस पैसिव वाइज में जा रहा है, हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, सो एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद वर्ब adapted as to make it applicable to all the high courts in the present states, formally so far as the then British India was concerned. British India was concerned is a passive wise में sentence जा रहा है। We had the order of 1937 and here spellings देखिए, रिमनरेशन, RE हाईलाइट है ब्लैक में, देखिए REMUNERATION, इस स्पेलिंग को लिख लीजिए, रिमनरेशन, ओके। अब देखिए एक ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऊपर से काउंट करेंगे तो 10th लाइन में, अडेप्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये फिक्स है, फिक्स प्रपोजिशनल फ्रेज है, फ्रॉम टाइम टू टाइम होता है, ठीक, फ्रॉम टाइम ऑन टाइम नहीं होगा, फ्रॉम टाइम ऑन टाइम हो गया तो गलत हो जाएगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए नेक्स्ट प्रपोजिशनल फ्रेज, विथ रिगार्ड टू, विथ रिगार्ड टू हमेशा टू के साथ यूज होता है, विथ रिगार्ड टू, ओके। सो दिस इज अ grammatical structure of grammar rule and dictation। प्लीज़ जिस भी को ये हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, कीप प्रैक्टिस, बिकम द बेस्ट स्टूडेंट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट। टेक केयर।